Hello friends, I am Dr. Sankalp Dudeja. I am a pediatrician and newborn specialist in Gurgaon. In this video, we will be talking about constipation in children. Constipation is a very common problem in pediatrics. It is extremely common in our day-to-day practice. And how do you define constipation? Constipation is passage of hard and infrequent stools. So normally हम कहते हैं कि एक बेबी को फर्स्ट 6 months के बाद दिन में 1 से 2 पॉटी होना चाहिए एंड दिस शुड बी सॉफ्ट एंड ईजी टू पास. कई बार हम पेरेंट्स से कहते हैं कि शायद आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है एंड जैसे कॉन्स्टिपेशन कैसे हुआ, बच्चा तो रोज़ पॉटी कर रहा है. सो कॉन्स्टिपेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट फ्रीक्वेंसी, इट्स ऑल्सो अबाउट कंसिस्टेंसी एंड एफर्ट. हो सकता है बच्चा रोज़ पॉटी कर रहा है बट द पॉटी शुड बी सॉफ्ट, ईजी टू पास एंड इट शुड कम आउट विद मिनिमल एफर्ट. अगर बच्चा रोज़ पॉटी कर रहा है बट पॉटी हार्ड पेलेट लाइक आ रही है, ड्राई पॉटी, और बच्चे को बहुत ज़ोर लग रहा है पॉटी करने, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन ही है. सो लुक एट ऑल द 3 aspects of stools, which is frequency, consistency and effort. Frequency should be 1 to 2 times a day. Consistency should be paste-like, easy to pass, and it should come out with minimal effort and no pain. Right? Constipation is very common in children. It will present with not just hard stools, it may also present with other vague complaints. कई बार बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होती है और वो दूसरी तरह की कंप्लेंट से प्रेजेंट करता है. बच्चा इन जनरल खाना छोड़ देता है, बच्चे की एपेटाइट लॉस होने लगता है, उसको टमी ब्लोटिंग, गैस होने लगती है, या फिर उसको बार बार टमी में पेन होता है. ऐसा कहा जाता है कि जितने पीडियाट्रिक्स ओपीडी प्रैक्टिस में बच्चे पेट दर्द के आते हैं उनमें से 50% बच्चों को अंडरलाइंग हिडन कॉन्स्टिपेशन ही होता है. So make sure that you keep a track of stool of your child, and if you have any of these 3 aspects, if frequency, consistency or effort affected, that is constipation, right? जितने बच्चों को constipation होता है उनमें से 90 to 95% बच्चों को functional constipation होता है, यानी इसमें कोई underlying medical illness नहीं होता. Functional constipation का मतलब बच्चे की डाइट और लाइफस्टाइल ही उसका कारण है, इसमें कोई मेडिकल इलनेस नहीं है. डाइट में काफ़ी ट्रिगर्स हैं जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है. कॉमनली हम इस वीडियो में 4 कॉमन ट्रिगर्स की बात करेंगे. पहला ट्रिगर, लैक ऑफ फाइबर विच इज़ लैक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. हम कहते हैं बच्चों को एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए जिसमें 25% फ्रूट्स वेजिटेबल्स, 25% वेजिटेबल्स, 25% ग्रेन्स एंड 25% पल्सेस. ये सभी फूड ग्रुप्स इक्वली रिप्रेजेंटेड होने चाहिए. रफली हर बच्चे को दिन में 2 फ्रूट सर्विंग खाना चाहिए. अगर ये फ्रूट्स नहीं खा रहा बच्चा तो बच्चा कॉन्स्टिपेटेड रहेगा. सो सेकेंड रीज़न फॉर फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन इन चिल्ड्रन इज़ विदहोल्डिंग टेंडेंसी. क्वाइट ऑफन चिल्ड्रन they withhold, they avoid going to the washroom, and the stools, if they spend time in the intestine, the water gets absorbed and stool becomes dry and lumpy. So encourage your child to pass stools, especially after meals. They have maximum urge of passing stools after meals, so make sure that you encourage your child to pass stools after meals, and you can use a footstool when you are making the child sit on the potty seat. Using a footstool below your seat, below your feet, will help a better angle between the thighs and the rectum, and it helps you evacuate better. So encourage your children to pass stools after meals, to spend at least 5 to 10 minutes on the potty seat after meals, and please discourage withholding tendency. Third dietary trigger for constipation is lack of water. All children, as their solid intake continues to increase beyond 6 months, their water should increase along. If solids keep increasing, water doesn't increase, they will have constipation. As a rough guide, we say that water intake should be roughly 8 ounces per year for the first 10 years of life. So that means around 240 ml for 1-year-old child. It should be 480 ml for a 2-year-old child, and so on. 8 ounces per year for the first 10 years of life. If your child is not drinking adequate water, that can lead to constipation. And last but not the least is consumption of packaged food. Packaged foods like biscuits, breads, chips, they're all are a common trigger for constipation. Most of them have processed flour like maida. They're made with palm oil, and we know that these ingredients like maida and palm oil, they are a common trigger for constipation. So avoid them as much as possible. There are certain homemade remedies for constipation which all parents should be aware of. One is plums and prunes. They are natural laxatives. Packaged prunes are easily available these days, and there are multiple
ways you can include prunes in diet. Prunes can be given as juices, as purees, it can be added to porridges, and it's a very good and safe natural laxative which can be given anytime after 6 months onwards. Other ingredients that can be given for constipation are anjeer, raisins, munakka. These are all natural laxatives, and these can be given in case your child has constipation. In case the constipation is not improving despite dietary changes and home remedies, please consult your pediatrician. Sometimes these children, they require regular laxatives, and there is no harm in giving laxatives under medical supervision, but make sure that constipation is addressed and it should not hinder in proper appetite and growth of the child.